In this video, we will talk about the concept of position of a point with respect to an ellipse. So, let us try to understand the situation here. तो सपोज यहाँ पे हम ना एक एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं एंड इनके दो एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. ना अगर कोई पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, मतलब सी ellipse is a enclosed shape. So this is a region which is called inside of ellipse, and this is the region which is called outside of ellipse. So how do we determine whether a point lies inside, outside or on the ellipse? तो सबसे पहले let me say we take a point here and इस point का coordinates let us say हम लोग ले लेते हैं x, k and यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन द एक्सिस एंड लेट अस से दिस पॉइंट will be x, y. Now, if the equation of ellipse is given as x square by a square plus y square by b square equals to 1, तो ये जो पॉइंट है ये तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. So now look at this diagram. This distance is basically y और ये वाला जो डिस्टेंस है ना, this is k. So clearly we can say modulus of k is greater than modulus of y. Now, using this equation, अगर हम y find out करना चाहेंगे तो we can write y square by b square is equals to 1 minus x square by a square, and this gives us y is equals to square root of b square into 1 minus x square by a square. So therefore, अगर हम इस y की वैल्यू यहां पे पुट कर दें एंड दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो वी कैन इजीली राइट k square will be greater than b square into 1 minus x square by a square. अगर हम इसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करेंगे so we will bring first of all this b square on the left hand side, so we can write k square by b square is greater than 1 minus x square by a square, and इस टर्म को भी अगर हम लेफ्ट में लेके आ जाए तो विल गेट x square by a square plus k square by b square is greater than 1. So 1 को भी हम लेफ्ट में लेके आते हैं तो x square by a square plus k square by b square minus 1 is greater than 0. So अगर इस पॉइंट को हम x, k के बदले लेट अस से हम x1, y1 ले लेते हैं, so this equation will become x1 square by a square plus y1 square by b square minus 1 is greater than 0. So this is the condition जब पॉइंट बाहर लाई करता है. अगर पॉइंट एलिप्स के ऊपर लाई करता तो k will become equal to y. So यहां पे जो ये ग्रेटर देन साइन था ना उसके बदले एक इक्वल टू आ जाएगा. और अगर the point P lies inside, we can say the distance k becomes smaller than y. तो I hope you understand this condition. Now ये जो portion हमको मिला ना इसको हम ध्यान में रखेंगे. We will call this equal to S1. So let us say how do we put it up for easy understanding. So for now we will consider S1 as x square, x1 square by a square plus y1 square by b square minus 1. S1 is greater than 0, we say the point lies outside the ellipse. If S1 is equal to 0, point lies on the ellipse. If S1 is less than 0, then the point lies inside the ellipse. So this is the condition, और इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमारा पॉइंट एलिप्स के अंदर लाई कर रहा है
बाहर लाई कर रहा है या एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है. So these are the three things that we have to remember. Now let us look at a simple question based on this concept. यहाँ पे ये कह रहा है check whether the point 3, 2 lies inside, on or outside the ellipse. So this is the equation of ellipse that is given to us. Now since इस point के बारे में हमको check करना है, तो let us say x1, y1 is equals to 3, 2. And we know S1 is given as x1 square by a square plus y1 square by b square minus 1. तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं. So this gives us S1 is equals to x का वैल्यू है, x1 का वैल्यू है 3. So 3 square is 9 by a square, you look, is 25 plus y1 square will be 4 by 16 minus 1. So this clearly, see, this becomes 1 by 4. So 9 by 25 minus 3 by 4. अगर हम LCM लेके simplify करेंगे, तो this will become 100. This will become 36 minus 75. Now clearly this is less than 0. And S1 less than 0 is the condition which says the point lies inside of the ellipse. So that is the answer to this question.